Welcome back to my YouTube channel. Myself cajoshikumar. In this video we are going to cover secondary adjustment. I'm telling you very important topic. 8 marks का क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से. So watch this video till the end. ठीक है? What is secondary adjustment? तो before knowing secondary adjustment you should know what is primary adjustment. तो what is primary adjustment? ये मैं example के through I'll explain. ठीक है? तो I have sold certain goods to my associate enterprise. और उसका सेल प्राइस था 10 crores. Okay? Till here it is fine. बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल डू इट्स ओन असेसमेंट और बोलता है कि इट्स वैल्यू इज़ नॉट 10 crores, द वैल्यू शुड बी 13 crores. ठीक है, वो ऑर्डर पास कर दिया. नाउ इन माई बुक्स आई हैव टू इंक्रीज 3 crores. राइट, अर्लियर आई हैव रिकॉर्डेड 10 crores as sales in my books. Now I have to increase another 3 crores in my books. Okay, now the point here is, so this is primary adjustment. Okay, primary adjustment is increase in income of the SSE due to adjustment in ALP. Okay, प्राइमरी एडजस्टमेंट हो गया. नो व्हाट इज सेकेंडरी एडजस्टमेंट? सेकेंडरी एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है. ये जो इंक्रीज हुआ ना, यू शुड ब्रिंग बैक दैट अमाउंट. जो एसोसिएट एंटरप्राइज है, ही शुड पे दैट अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days. ओके, इन केस इफ ही डज नॉट पे दैट अमाउंट, दिस 3 crores विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड लोन. मैंने मेरे एसोसिएट एंटरप्राइज को लोन दिया जैसा. ओके, आई हैव मेड सम एडवांस टू माई एसोसिएट एंटरप्राइज और उसके ऊपर इंटरेस्ट चालू हो जाएगा मेरे P&L में. I will be recording interest income on this 3 crores. समझ में आया? So that is your secondary adjustment. Okay, secondary adjustment, if the excess amount is not repatriated to India within the prescribed time, that is 90 days, this 3 crores shall be treated as loan advance given to associate enterprise and interest will be calculated on it. Okay, so that is your primary and secondary adjustment. Now we will go a little bit deeper. तो ये रिपैट्रिएशन है ना, ही हैज़ टू ब्रिंग दैट अमाउंट विद इन हाउ मच पीरियड? 90 days. एंड दिस 90 days विल बी काउंटेड फ्रॉम व्हाट डेट? देर आर 2 days. ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. अगर असेसमेंट हुआ, ए ने पास कर दिया ऑर्डर कि दिस इज़ नॉट 10 crores, दिस इज़ 13 crores, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर 90 days. ठीक है, अगर 90 days के अंदर अंदर पेमेंट इंडिया को आ गया, फाइन. अगर नहीं आया तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड. Okay, interest will be calculated from what date? You won't calculate from the 90th day. You will come back to date of order. From the date of order, interest will be calculated. Understood? For in any other cases, it is the date of filing return of income. Okay, so these 2 dates are important and 90 days is also important. And then again, interest calculation, you will calculate from the above dates. Okay, see now you are here. This is the date of order. You will see for 90 days. Okay, this is your 90 days. In this period, the income is not paid. Then you will go back to the first date. You will go back to the date of order and calculate interest for all the period till the time it is made payment. Okay, great. Interest rate. What are interest rates? Okay, till here we are saying interest should be calculated and all. यहाँ पे interest का rates भी दिया गया. Now what are those rates? There are 2 types of rates. Okay, first thing you have to see is in which currency it is denominated. Okay, if it is international transaction is denominated in Indian, you should take SBI rate, 1 year SBI rate. Okay, as on 1st April of the previous year, 1 year SBI rate, add 3.25% to that rate. Clear? What if the international transaction is denominated in foreign currency? If it is denominated in foreign currency, you will take 6 months LIBOR rate. Okay, on 30th September of the previous year plus 3%. हाउ टू रिमेंबर? ऐसा कुछ निमोनिक कुछ भी नहीं है. 3 to 4 times रिविजन करो, आराम से याद हो जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर. राइट, सो 1 year SBI रेट, अगर इंडियन करेंसी है तो 1 year SBI रेट ऑन 1st April. 1st April में जो रेट है उसको लेना प्लस 3.25% उसको ऐड कर देना. इफ़ इट इज़ डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, यहाँ पे 6 months LIBOR रेट लेंगे, 30th September का लेंगे, प्लस 3% ऐड कर देंगे उसको. डन. चलो इंटरेस्ट रेट्स भी हो गया. चलो एडिशनल इनकम टैक्स समझो. मेरा और मेरे एसोसिएट एंटरप्राइज का एग्रीमेंट क्या था? 10 crores का. बीच में आया कौन? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. बोलता है कि ये 10 crores नहीं है, 13 crores है. वी चेंज इन आवर बुक्स. ठीक है रे भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए आई हैव इंक्रीज टू 13 crores. विल माई एसोसिएट एंटरप्राइज पे दैट अमाउंट? वो तो बोलेगा अरे एग्रीमेंट तो 10 crores का है. ही इज़ नॉट गोइंग टू पे द अमाउंट. नो. सो व्हाट इज़ द अदर ऑल्टरनेटिव? उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव दिया लॉ ने. बोलता है जो भी एक्सेस अमाउंट है ना, पे एडिशनल टैक्स ऑन दैट. व्हाट इज द टैक्स रेट? 18%, 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस. इट कम्स टू 20.9664%. ठीक है,
पे एडिशनल टैक्स, इतना टैक्स वो एक्सेस अमाउंट मतलब 3 crore के ऊपर, पे दिस 20%, okay, you're good to go. Till the time you make the payment, interest will be calculated. Okay, once you make the payment, secondary adjustment की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. There won't be any interest calculations at all. Understood? By paying additional tax, there is no need for secondary adjustment and no interest from the date of payment of additional tax. ठीक. Now situations where secondary adjustment is not required. There are two situations where secondary adjustment is not required. मतलब ये interest का जो है ना, उसकी ज़रूरत नहीं, बस प्राइमरी एडजस्टमेंट करो, अपने बुक्स में इंक्रीज कर दो, ख़त्म. सेकेंडरी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं. व्हेन द अमाउंट इंक्रीज्ड बाय AO इज़ ओनली 1 crore. यहाँ पे इन आर एग्जाम्पल द अमाउंट इंक्रीज्ड इज 3 crore. ठीक है. अगर AO बोलता द वैल्यू इज़ 10.5 crore, ठीक है, यू विल ओनली मेक चेंजेस हियर, इन योर बुक्स यू विल डू 10.5 crore, 0.5 crore बढ़ा देंगे, ख़त्म बात. देयर इज़ नो सेकेंडरी एडजस्टमेंट. सो remember very carefully, additional income tax point is also important, and also this 1 crore point. Okay, agar if it is 1 crore or less, okay, up to 1 crore, no secondary adjustment. ठीक है, ये पढ़ लेना, easy. And then the other one is, if primary adjustment is made before assessment year 16-17, अगर उससे पहले प्राइमरी एडजस्टमेंट करे, उसके लिए सेकेंडरी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, बिकॉज सेकेंडरी एडजस्टमेंट केम आफ्टर दिस ईयर. Okay, secondary adjustment will be made applicable from financial year 16-17. Okay, so this is your secondary adjustment. I'm telling you, question will be from this only. अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करो, प्लीज़ करो. चलो, see you all guys in another video. Let's go.